हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें दो सब टॉपिक हैं। वन इज व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सेकेंड इज हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. इट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अब हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे और क्यों बचाएं? फॉर फ्यूचर जनरेशन वी वांट आवर बायोडाइवर्सिटी टू बी देयर. तो एक फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. This is why should we conserve biodiversity? Why should we conserve biodiversity? क्यों हम इसको कंजर्व करें? So we'll discuss this question in following 3 points. तो 3 points में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी और ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन है. छोटे बचपन में आप पढ़ते थे why we need forest, what are the uses of forest. उसी क्वेश्चन को आप सोच लो हम बड़ी एक थोड़ी ज़्यादा साइंटिफिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं बस. So number 1 is this is narrowly utilitarians. First is this is narrowly utilitarians. Narrow utilitarians. This is, I'll write it, narrowly utilitarians. ठीक है. Second is broadly utilitarian. Third is ethical. This is ethical. जो हमारे यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को या वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस को. To them, those who utilize, we call them utilitarians. Now, narrow utilitarian means those who are dependent on the wildlife. What for? Fodder, cereals, different kind of medicine, resin, tannin, बहुत सारे जो किस लिए? Those who are dependent on the biodiversity. What for? Narrow means their own need. What for? For medicine, fodder, timber. Then you can say for this raw material for their factories, like in case of matchstick. So they use it for various purposes. Fine. So that is a narrow utility, that is called narrow utilitarians. Now this gives economic benefit to the people, but it actually harms the economy of the biodiversity. Fine. So this is very easy. Just you have to understand that for the narrow range of utilization. The second comes is what? This is broad utility. In broad utility, how do we utilize this diversity in a broad term? Broadly, if I say, this is broadly how we use this diversity. This is not for one man or for one owner of the factory,
but this is for the whole ecosystem. So this is what for ecological services. This is number 1. Here you have to learn 3 points. One is ecological services. Ecological services. Fine. Like diversity is directly related to the ecosystem. Because of this, there is energy transfer, there is energy flow, food web is there. So producers are connected to the consumer, and so the ecosystem keep on functioning. Second is most important, the oxygen source. You know that 20% of our oxygen का जो total 20% है is obtained by what? Amazon forest. इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? Lungs of the earth is obtained from what? The Amazon forest. Fine. The third utility, which is broad utilization, is what? The relation of pollinators and the plant. This is something very important, because without pollination they cannot have their next generation. So it is what? Pollination is the next point. And fourth of it is what? Aesthetic pleasure. People go and they spend their time to see wildlife sanctuaries, to see the zoological park, national park, even the scenic beauty. So that is what your aesthetic appeal. This is aesthetic pleasure. This is for aesthetic pleasure. Fine. Now, these are the broad utilization of our biodiversity. Fine. Now, the next is ethical utilization. Ethical utilization is more of philosophical or spiritual. The people think that it's their moral duty. This is what? Ethical. Ethical means our moral duty. Spiritually we feel it. This is philosophical, or I should say the moral duty. More of moral duty, that we think that every species has their own intrinsic value. That every, whether it is a plant or animal, every species has an intrinsic value. So we have no right to destroy a species. That is our moral duty. That is the ethics. So philosophical or spiritual, if we think that we should not destroy the biodiversity. So these were the 3 points to just transfer our biological, you can say, the biological wealth to our next generation. Fine. So I have told you कि why should we conserve our diversity. अब आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्सिटी को हमें क्यों कंजर्व करना है. अपनी बायोलॉजिकल हेल्थ को, इस लेगेसी को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सारी अपनी जो पर्सनल ग्रीड है इसको फुलफिल नहीं करना है. तो टू हैव द वैल्यूज, टू हैव the produce for the next generation, we have to conserve. ठीक है, जिससे दूसरे लोग भी इस एस्थेटिक का प्लेजर ले सकें, दूसरे लोग भी क्या है इकोसिस्टम सर्विसेज को ले सकें. So all this. So there were 3 points. It was a very simple topic. Now this is important. You can mark it. You can give it a hashtag to this topic. How to conserve biodiversity. It is important. Fine. This is how to conserve
बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट इज इन सीटू. इन सीटू मतलब इनसाइड, जहां पे है वही. सेकेंड इज XC2 conservation. In situ conservation means protection of biodiversity in wherever they are. We have to protect them as a whole ecosystem. Fine. So first I'll discuss in situ conservation. This is the protection of biodiversity in their natural habitat as a whole ecosystem. एक पूरे इकोसिस्टम को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. इन देयर विच हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट. उसकी नेचुरल हैबिटेट में हमको उसको प्रिजर्व करना है. अगर आप एलिफेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं तो आप उस पूरे एरिया को, उस पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करेंगे जहां पर उसकी हैबिटेट है. दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन. अब इन सीटू कंजर्वेशन जो है, इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड. किस किस तरीके से हम इन सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं. वेरी फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज ऑल अंडर इन सीटू कंजर्वेशन. इसका मैं लिस्टिंग कर देती हूँ. नंबर 1 इज हॉटस्पॉट्स. सबसे पहले हमको क्या करने हैं, इसमें हॉटस्पॉट्स करने हैं. ये मैं आपके लिए पहले एक लिस्ट बनाती हूँ. अंडर इन सीटू कंजर्वेशन वी हैव हॉटस्पॉट्स, वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स. देन वी हैव व्हाट, नेशनल पार्क. दिस इज नेशनल पार्क्स. ये आपको सब याद करना है, नेशनल पार्क. देन यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. आप बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गए होंगे, ठीक है. दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. देन यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ व्हाट, sacred groves or sacred areas. This is sacred groves. These are the ways to conserve what, biodiversity and under natural condition. Again and again I am telling you कि आप कोई भी प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज को वहां से नहीं निकालेंगे. उसकी नेचुरल हैबिटेट में ही जो बड़े बड़े एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो लोग, उन्होंने ये एक मेथड निकाला कि हम डाइवर्सिटी को उसकी नेचुरल हैबिटेट में एज अ होल इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करेंगे. तो सबसे पहला क्या है, हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट क्या होते हैं कि हॉटस्पॉट्स आर द एरिया वेयर यू हैव हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस. जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है. And there is a high degree of endemism. Endemism means कि the species which are found on those hotspots, you will not find them anywhere else. I am talking about this hotspots. Hotspots क्या हैं? Are the areas with the high, or you can say the maximum species richness. ठीक है? With the high species richness. वहाँ पे number of species per unit area बहुत ज़्यादा होगी. And there is what, endemism. मतलब ये species हमारी क्या है, local level में है.
and you will not find this species anywhere else. और अगर वो यहाँ से खत्म हो गई तो वो पूरी जगह से खत्म हो जाएगी. Fine. So we have to protect this area. So it's called what is hotspot. पहले तो आप ये जान लो कि hotspot क्या है. किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी बायोस्फीयर में वो एरिया जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है. ठीक है. एंड द स्पीशीज शोज हाई एंडेमिज्म. इसमें एंडेमिज्म है. दिस इज, लेट मी करेक्ट दिस स्पेलिंग, दिस इज एंडेमिज्म. ठीक है. एंडेमिक स्पीशीज है वो. You can say this is endemic species. Fine. This is endemic species. Endemic means the species is what? Local, and you will not find it anywhere else. There are several examples of such. ठीक है. तो हमारे पास टोटल वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? There are 34 hot spots. Total 34 hotspots are there, and fortunately our India has 3 hotspots. हमारे जो इंडिया है, इंडिया में we have 3 hot. India covers 3 hotspots. 3 hot spots, and these hotspots you all may be knowing that these are Western Ghat, Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayan range. You have to learn these names. So number 1 is Western Ghat, then you have Sri Lanka, and India cover the some part of it, and Indo-Burma and Himalayas. So those are the 3 hotspots. India also cover a part of it. ठीक है. I'll write it so that you can list it. It is Western Ghats, then you have Sri Lanka, then you have Indo-Burma and Himalayas. Now, fortunately, we are very close to what? Himalayas. The north part of our country is mainly the foothill of Himalayas. So this is what? The area of hotspots. ठीक है. This is specifically what for these 3 hotspots are in what? India. ठीक है. तो चलिए, ये हमारे we talked about what? Hotspots. तो हॉटस्पॉट में एक बार फिर रिवाइज करूंगी. हॉटस्पॉट्स क्या हैं? द एरियाज वेयर यू हैव हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस. और ये स्पीशीज क्या है? वहाँ की लोकल है, वो एंडेमिक स्पीशीज है, और अगर यहाँ से खत्म हो गई तो सब जगह से खत्म हो जाएगी. सो उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करके बचाना है. फाइन. देन हमारे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में 3, and these are the names. Fine. Now we have another unit to conserve, that is called Biosphere Reserves. ठीक है. We call them what is Biosphere Reserves. Biosphere Reserves. There are many reserves, but in our India we have 14 Biosphere Reserves. These are the protected areas. Human activities are not allowed there. Then you have National Park. There are 90 national parks in India. I'm only talking about India. It's given in your book also. Then wildlife sanctuaries are many. We have 448 wildlife sanctuaries. Fine. So ये सब हमारे क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? सेक्रेड ग्रुप्स. ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? सेक्रेड ग्रुप्स आर द एरियाज वेयर वी हैव टोटल प्रोटेक्शन. देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. There is a total
total protection of biodiversity, total protection of biodiversity by the local people. कौन करता है? लोकल पीपल जो है बायोडाइवर्सिटी को टोटली प्रोटेक्टेड करके रखते हैं बिकॉज दे वर्शिप इट. You may be knowing there is a tribe in the northeast that is called Khasi and Jayantiya. देखो खासी एंड जयंतिया क्या है? ट्राइब्स हैं and they are found in or they are the resident of मेघालय. मेघालय में आपकी खासी एंड जयंतिया दे आर व्हाट? ट्राइब्स. क्या है ये? ट्राइब्स हैं. सो दे डोंट अलाउ द पीपल टू cut the trees of their locality or to destroy the diversity of their area. Other than this, in Aravalli Hills on Rajasthan, again you have what? Such kind of tribes. Then you have in Western Ghat. Here in Rajasthan also you have Rajasthan. Then also in Karnataka. Also in what? Maharashtra. Then you have Bastar, the tribals areas. So they don't allow the people to destroy their diversity. So those areas are protected. It is a method of conservation of biodiversity, and those areas are called nothing but sacred groves. Fine? Okay. Now the last topic of the chapter is XC2 Conservation. देखो, अगर आप वाइल्ड लाइफ को या डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं एक नेचुरल हैबिटेट में, आपने एलिफेंट को, रैबिट को नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एंडेंजर्ड हो रहा है, लाइकली टू गेट एक्सटिंक्ट, आप क्या करोगे? उसको वहाँ से पकड़ के ले आओगे और उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट बनाओगे आर्टिफिशियली. बिल्कुल नेचर तो हम बना नहीं सकते, आर्टिफिशियली बनाएंगे और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे कि क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग पार्क आपने देखा होगा लखनऊ में, है ना. सो नेचुरल हैबिटेट वहाँ पे तैयार करेंगे, जैसे टर्टल्स को करते हैं, उनका ब्रीडिंग प्लेस बनाते हैं, है ना. सो सच काइंड ऑफ conservation is called what is? This is XC2 conservation. XC2 means outside the natural habitat. ठीक है? XC2 is what? This is outside the natural habitat. नेचुरल हैबिटेट से उसको हमने वहां से निकाल दिया और हमने उसके लिए आर्टिफिशियल जगह बनाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. आप कभी जूलॉजिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन या किसी जू में जाते हैं, वहाँ पे उसके लिए देखो वैसे ही केव बना के रखते हैं, बर्ड्स के लिए भी स्पेशल जगह बना के रखते हैं और वहाँ पे कहीं लिखा रहता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, है ना. उसको नेचुरल हैबिटेट उसको कोशिश करी जाती है. तो इसके हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लाइक वी हैव जूलॉजिकल पार्क बना देते हैं और लोग उनको देखने भी जाते हैं. दीज आर जूलॉजिकल पार्क इज नंबर 1. ठीक है. सेकेंड इज वी हैव बोटानिकल गार्डन में भी आपने देखा होगा नाम लिखे रहते हैं और स्पीशीज का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है. सो दोज आर व्हाट? बोटानिकल गार्डन, सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड और उनको अपनी देखभाल में रखते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर आया आपका दिस इज वाइल्ड लाइफ क्या होती है? सफारीज. आप बहुत सारे नेशनल पार्क गए होंगे, काजीरंगा गए होंगे, जिम कॉर्बेट गए होंगे, तो सफारी आप जाते हैं तो वो जो एरिया है वो पूरा क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है. यू कैन नॉट टच एनीथिंग
you only have to go and see, and you can't disturb them also. वाइल्ड लाइफ सफारीज, ठीक है। और आपका अगर यहाँ भी प्रिजर्वेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ। अब हम ना तो एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में प्रिजर्व कर पा रहे हैं, ना वाइल्ड लाइफ सफारी में, देन व्हाट वी डू। अगर प्लांट स्पीशीज हमें बहुत डर है कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी या कोई एनिमल स्पीशीज, देन व्हाट वी डू, वी टेक द जेनेटिक मटेरियल इन द टर्म्स ऑफ जर्म सेल। आप क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन, और वी कैन टेक इवन स्पर्म, यू कैन टेक इवन द सीड्स आप ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, आप एम्ब्रियो ले सकते हैं, and we can preserve them in the laboratory at very low temperature। आप उसको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन, बट दिस नाइट्रोजन हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लिक्विड नाइट्रोजन की फॉर्म में, उसमें क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व कर देंगे। And this preservation is called what is cryopreservation. This is an important term, last है term लेकिन important है। This is called what is, this is cryopreservation, ठीक है। तो ये cryopreservation हमेशा कहाँ होता है, लेबोरेटरी में होता है। ये सब हमारे क्या है, XC2 कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था आपका 3 मार्क्स के लिए, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन एंड XC2। आप समझ लो, इन सिटू जहाँ पे है वहीं करना है, XC2 में हमने उसको बाहर लाके कंजर्व करना है। और लैब में आप स्पेशल कंडीशन में कंजर्व कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में, बहुत कम टेम्परेचर पे, यू कैन प्रिजर्व इट फॉर मैनी ईयर्स, दैट इज XC2 कंजर्वेशन। अब लास्ट ऑफ ऑल, biological wealth is no one's property. It has no geographical boundaries. ये नहीं कि हमारे ये इंडिया की है, this is for US and this is for New York. No. Biological wealth is of everybody. Diversity is not the property of one person or one country. We all have to conserve it. So there was a summit in Rio de Janeiro in 1992 that is called Earth Summit, ठीक है। अब जब हमको ये थ्रेट हो गया है कि हमारी डाइवर्सिटी कम हो रही है, तो now the all people from different countries are getting aware. Now also in 2002 190 countries has participated in Johannesburg in South Africa, and they all pledged together that we are going to preserve our biodiversity, we are going to conserve our diversity, and we will just enrich our biological health. तो इसमें 190 countries ने participate करा था, ठीक है। तो this was all about the chapter, और ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं रिवीजन वीडियो में स्टार्ट करूँगी, और बहुत जल्दी मैं अपने रिवीजन वीडियो देने वाली हूँ। आप अपने जो भी आपके टॉपिक हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको आंसर करूँगी। टिल देन, bye bye, take care.